The Pushpa 2 Stampede showdown continues to escalate. Superstar Allu Arjun was grilled by the Hyderabad cops for nearly 4 hours today. Sources tell India Today that the actor answered all questions without hesitation and that he told the cops that he did not know of the stampede death till the next morning. Allu Arjun, who's facing the heat over the stampede at Pushpa 2 screening, is grilled by the Hyderabad police. The superstar was questioned at the Chikatpalli police station on Tuesday. India Today has accessed the details of Allu Arjun's questioning. Sources say the police grilled the actor on his claims made at the recent press conference. According to sources, Allu Arjun was questioned whether someone asked him to reach Sandhya Theatre on December 4th. The police also asked the actor if the theatre management informed him not to come to the venue and if his personal security detail was briefed in advance. After 4 hours of grilling, Allu Arjun left the police station. Sources say that Allu Arjun answered most of the questions without hesitation. The actor allegedly said he came to know about Revati's death only the next day. The notice sent to Allu Arjun, exclusively accessed by India Today, mentions recreation of the scene at Sandhya Theatre. His legal team was spotted at the Sandhya Theatre. Meanwhile, politics is heating up with Congress blaming Allu Arjun and BRS hitting back at the ruling party. We are nowhere connected with that incident. CM, Chief Minister, has ordered for stringent action against those who have attacked Allu Arjun's house. Law and order will take its course of action on all equally. This whole issue has become Congress government versus Allu Arjun, which is not right. Let the court decide. This whole thing looks up that, probably Revant Reddy ji wants to be a Robin Hood by saying that, I've hit a rich man. But why selective sympathy? To add to the controversy, Telangana Minister Sitaka questioned the recent national award conferred on the movie Pushpa. A fresh complaint was also lodged against Allu Arjun by Congress MLC Teenmar Malana, specifically criticizing a scene in which he urinates in a swimming pool while a police officer is present in the pool. We are, as a part of government, I am objecting that this kind of message we are giving to the viewers, that is not correct. That should be removed from the movie, that scene. The face-off between Revant Reddy government and Allu Arjun is set to have major political repercussions, with all parties in the state entering the fray and taking sides. With Apurva Jayachandran, Bureau Report, India Today. Meanwhile, even as Allu Arjun's questioning was on, the Hyderabad cops released 2 more videos of the 4th December stampede. The video shows the moment the victim, Revati, collapses and was carried out. The images show the complete mayhem that ensued during the premiere. Probe intensifies into the Pushpa 2 stampede horror. India Today has accessed more CCTV footage of the December 4 stampede at the Sandhya Theatre that killed a woman and left her child severely injured. The footage shows the exact moment when Revati was being taken out by 4 bouncers, unconscious, 2 holding her arms and 2 holding her legs. Second video reveals how the crowd turned unruly as they entered Sandhya Theatre. CCTV footage clearly shows the crowd getting out of control, barging into the theatre from the main gate, stepping on each other. The images show many people falling on the ground as bouncers push the crowd back. In another video, superstar Allu Arjun can be seen
being escorted outside, surrounded by his personal security and police personnel, moments after the deadly stampede. The police will recreate the incident at the Sandhya Theatre to understand the sequence of events. Bureau Report, India Today. Moving on, the political fight over B.R. Ambedkar and his legacy continues to escalate. The BJP and the opposition are at loggerheads, accusing each other of insulting Ambedkar. Chief ministers in BJP-ruled states have come out all guns blazing at the Congress, accusing the party of exploiting the Dalit icon and his legacy. Mayawati also made a call for nationwide protests. BSP workers took to the streets demanding that Home Minister Amit Shah take back his remarks. Mayawati also launched a scathing attack at Congress, accusing it of shedding crocodile tears. एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों, वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, एक प्रकार से कांग्रेस बौखलाई, और बौखलाहट में इस प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान किया है। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने आप को न्यौछावर किया है, और उसके बाद उसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इसको जिंदा रखा। परंतु जो उनकी कार्यप्रणाली थी, वो कार्यप्रणाली इस देश को नुकसान की तरफ ले जाती दिखाई दी, और लगातार भ्रष्टाचार में डूबती हुई ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसको जिंदा रखा। परंतु आज देश समझ चुका है, और जब देश समझा है तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं, समाप्त हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस खानदान को माफी मांगना चाहिए अंबेडकर से, भारत से, कि अंबेडकर को जो अपमान किया है, राहुल गांधी से लेकर के उनके दादाजी परदादाजी सबने अपमानित किया, उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। आज वो बोल रहा है शर्म से चुल्लू भर पानी में कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। बैठक हो रही है, मोर्चा निकाले जा रहे हैं, और एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कि किस तरह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया है, और एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए, और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आकाश जी, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, फिर भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने संसद में बाबा साहब जी के लिए जो टिप्पणी करी, उससे करोड़ों हमारे समाज के करोड़ों लोगों को, हमारी बहुजन समाज पार्टी को, हमारे समाज के लोगों को जो ठेस पहुंची है, उसके खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट निकाली है। आदरणीय बहन जी के निर्देशानुसार हम यहाँ पर शांतिपूर्वक से ये प्रोटेस्ट कंडक्ट करेंगे। गृह मंत्री ने बकायदा सफाई भी दी,
बीजेपी कह रही है कि डॉक्टरेट वीडियो है, उसके बाद आप क्या? देखिए, कहीं ना कहीं तो जहां इतना धुआं है तो वहां पे चिंगारी तो होगी, और ये जो गलत बात कही है अब वो तो सब रिकॉर्डेड है, वीडियो पे रिकॉर्डेड है, ये संसद में लाइव कहा गया था, तो इसमें तो वो आप जितनी भी सफाई देना चाहें, बट जो गलत है सो गलत है। Meanwhile, the RSS chief Mohan Bhagwat's comments on the Mandir Masjid issue have Hindu seers seething. Spiritual leaders and scholar Jagat Guru Ram Bhadracharya has hit out at the RSS chief, saying Mohan Bhagwat may be the head of the Sangh but not of Hindu faith. तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. Rashtriya Swayamsevak Sangh Chief Mohan Bhagwat's recent statement on the Mandir Masjid issue has upset the seers. Spiritual leader and scholar Jagat Guru Ram Bhadracharya is the latest to push back. जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो, साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा भी. ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है. वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें. Seers organization Akhil Bharatiya Sant Samiti has also criticized Bhagwat, saying such religious matters should be decided by religious leaders rather than the RSS. जिन जिन जगहों के बारे में ये बातें उठी हुई हैं उनकी सूची बना ली जानी चाहिए और बना करके इस बारे में हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों के लोगों को, न्याय प्रिय लोगों को बैठ जाना चाहिए. जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए. हम प्रयागराज में कुंभ में एक बहुत बड़ा धर्म संसद करने जा रहे हैं, जिसमें काशी मथुरा की चर्चा होगी, जिसमें सनातन बोर्ड के निर्माण की चर्चा होगी, जिसमें जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे जो ठाकुर जी छिपे हैं, जिन पे पैर रख के लोग जा रहे हैं, उसकी भी चर्चा होगी. Delivering a lecture in Pune on India, the Vishwa Guru, on December 19, RSS chief Mohan Bhagwat advocated for an inclusive society. असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. On Friday, UP Chief Minister Yogi Adityanath hit out at the desecration of temples. कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संबल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है. Bhagwat's comments, however, have been welcomed by the opposition, but with certain skepticism. So one side they are doing all these things, on the other side they are propagating communal harmony. Clearly, they are actually clearly joking. You have to, whether the Prime Minister or any political leader, the word should come from the mind, heart. क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है. भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है. Bhagwat's remarks come in response to Hindu groups filing several petitions seeking surveys of mosques which they claim were built on temple sites destroyed by Muslim invaders. As this high-octane flashpoint escalates, who will blink first? Purveyors of faith or the patriarch of the Sangh Parivar itself? Bureau Report, India Today. Right away from the politics, the weather, the temperatures are plummeting.
Cold wave has gripped parts of North India. The hills are covered in snow, making it a mesmerizing sight. Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir witnessed fresh spells of snowfall today. Surface of the iconic Dal Lake in Srinagar also froze as the temperatures dropped to -6 degrees Celsius. Uttarakhand's Chamoli, Oli are all covered in a thick blanket of snow. The IMD has issued snowfall alerts and a warning as well for Uttarakhand and Himachal Pradesh. In the midst of this cold wave and snowfall, thousands of tourists have been stuck at the Atal Tunnel for 12 hours with kilometers-long traffic jams. Tuesday morning was another coldest morning in the Srinagar city. Currently, it is the temperature sub-zero -2 in the morning on Tuesday. During the night, previous night, the temperature declined to -6 degrees here in the Srinagar. For last many days, we are witnessing the freezing of famous Dal Lake here in the Srinagar, and today also the parts of this famous lake had frozen, and this will continue for few coming days, as the Met Department has said that this dry cold wave will continue till Thursday, when another spell of snow will start in the Kashmir Valley. In fact, you can see these cars cannot move in this frozen Dal Lake, and you can see, in fact, this is the position of the Dal Lake. This is the ice layer which gets formed during the night, and in the day it melts. Then only the movement of shikaras gets possible in the Dal Lake. Clearly, a cold wave sweeping across North India. Let's take a look at some of the visuals that come in the last 24 hours. Uttarakhand's famous tourist destination, Oli, is covered in snow. Valleys, trees, houses, all covered in a blanket of white. Meanwhile, 6 days Dras Winter Carnival begins. The carnival is organized by the Indian Army in -10 degree temperatures. The first day of the carnival witnessed ice hockey league matches. Streams and waterfalls in Jammu and Kashmir are freezing over. Jammu Kashmir's Rajouri is covered in a thick blanket of snow. Visuals on your screen show a water stream completely frozen. The tourist town of Manali received fresh snowfall. The enchanting snowfall has added to Manali's allure as a winter destination, drawing more tourists to experience its beauty. The temple of Kedarnath is covered in snow. The temple is closed in winters for devotees because of such extreme weather conditions. Meanwhile, it was curtains call for renowned legendary filmmaker Shyam Benegal, who passed away on December 23rd, 2024, at the age of 90. He was cremated with full state honours at Mumbai Shivaji Park Electric Crematorium today. His passing marks the end of an era. His legacy will continue to endure. That was there then. Is that a happy moment? Unfortunate that that time only Shabana was there and I wasn't in Bombay, and today Shabana, who really treats him almost like a father, she is not in Bombay. And wherever she, I mean, I spoke to her, she was crying. That's how it is. What a wonderful person, what a wonderful director, what a great man. 30 साल से तो जुड़ी हुई ज़्यादा, बट आज चले गए सारे लोग यही फील कर रहे हैं, पर इतने हंसमुख, इतने जिसको कहते हैं सब लोग उनको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, उनके लिए सभी बेताब हैं, आप किसी से भी बात कर लीजिए। तो श्याम बाबू के साथ ये पिछले मतलब 50 साल में बहुत संबंध रहा वर्क वाइज, और उसके अलावा भी हम श्याम बाबू को मिलते थे, तो इट इज ह्यूज, मतलब अभी मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जो ये लेगेसी जो छोड़ के गए हैं 50 साल 55 साल में जो उन्होंने काम किया है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में एक ऐसा मतलब अनमोल रतन आया जो आज उनको श्याम बाबू का नाम में एब्सोल्यूट जो ग्लोबल सिनेमा को बोलते हैं। For a fact-check segment, there's a claim suggesting a Muslim biker was harassing students in Uttar Pradesh and gets caught. The fact-check on that. Both are separate incidents and not related. There was no video of a Muslim biker harassing students in Uttar Pradesh.